Good morning to everyone, the esteemed panelists and the guests who have joined us. Thank you, Niharika, for giving the details of the center. But it is a very pleasant occasion. And I think we are very much thankful to Indira Gandhi National Center for Arts Regional Center in J&K. I think for me, as a director of the Center for Social Exclusion and Inclusive Policy in the University of Jammu, today is a new find of this Indira Gandhi National Center for Arts, that it is having a regional center in Jammu and Kashmir. And in that way, Shri Virendra Bhangru is regional director. Uh, Sir, I welcome you in this very particular webinar as a director of the center, and I'm happy to know that you are also being here in J&K and taking up issues related to the tribals and the tribal communities are concerned. Shri B.K. Khatana Sahab, you are also welcome. I have your profile that how you have been in the administration you are working about, and all those resource persons like Bilal Zaman, Irshad, Aswal, Rana Abrar, and Shabir Paswal, and all those participants who have joined us. I welcome you all. Today, it's the real occasion for us at the center in the university that as we have established through UGC this center and the Vice Chancellor of the University, Professor Manoj Kedar, he has always been eager to organize different interactions and the activities where we should be able to talk about different dimensions of the this particular community. Friends, we know that ultimately we are having a specific nature of the region as well as so far as our communities are concerned. In particular, Gujars and Bakarwals are concerned. When we conducted the studies, we find that this is the particular region where we can find that these Bakarwals, when they migrate from the hills to plains and they go up to even Gurdaspur area, Punjab region in that way. So how their life and living standards are being there, or how they are being there, having many of the activities or many of the problems as such. As a researcher or as a social worker, it becomes our duty that we should highlight, though the government is taking some of the initiatives to develop these communities. But what happens that whenever we are going for planning processes, many a times such communities are not getting the proper place in the mainstream development programs and the activities which are concerned. And many of the people, I would not shy off by sharing this thing through my own experience, that when such issues come, many people they claim that they are representative of these communities and they try to influence the policies as well as the administrative setups are concerned. But when we as a researcher go in the field and try to collect the data, we find through interactions and evaluating their, say, socioeconomic conditions, we find that these communities are not getting proper place, which would have been given to them in the planning processes. Because in the majority of the areas we are finding, where they are even in majority, thumping majority, even the care has not been taken up. I know as a professor of economics that when we talk about planning, planning takes the broader view of whole regional development or the nation's development. But it becomes very important for us also as a researcher or the social worker or any sort of centers at the regional level that we should try to see that how these programs have benefited and to what an extent these initiatives of the government have benefited to
this community. And what we can highlight here are how we can talk about these very particular issues. The third point which comes to my mind is very important, that whenever we talk about, we should have two very specific things in our mind. What I feel, I may be wrong on some counts, because you people are also very close to these communities and working there. We should not have any apprehension about that, how we presume or we have perception about this community. Whenever we talk about, our all facts should be based on the research and personal intervention in their lifestyle, because today is not that time that you can ignore any type of, say, any community as such. We have to have, because when we have this number of population and we are not able to bring them in the mainstream development process, it's not that they are suffering. It means that we as a whole, society as well as nation, are suffering, because a big chunk we have not brought to that very particular level. So I think this today's webinar, where we have to interact with all learned speakers who are very close to this community and working, and we would be getting the first hand information, and then we can transfer this information at the national level. Even as we have done in past also, we have conducted few research studies, and we have given these recommendations to the UT administration, to the tribal affair department as such, and we are happy that few of our suggestions they have taken up in their own initiative. So it means we have to talk about these things. Lastly, I would say that many times people tell us that why you are talking about such issues. Such issues are known to everyone. Whether do you talk about SCs, you talk about STs, you talk about in particular Gujar and Bakarwal communities are concerned, everyone knows what you are talking about. But I'm sorry to say that it's not that we should stop talking on these issues. So, as much as we are able to talk and raise the issues, because every day we find that we are having new issues cropping in, and we have to highlight all these issues every time, all the time, so that whenever we talk about any sort of issue of any community, these our communities should not be left over. Lastly, I am once again very happy to find Virender Bangru that we are getting one more collaborator with us. You are working in the field, and we would be happy to have future collaborations with you as well. And all learner speakers today, we would be lucky to listen to them, and this would give us more insight into the problem in that way. And Khatana Saab is having whole life's experience, and he has been in administration, with administration, work well, and hopefully today's webinar is going to benefit not only to only the participants who have joined us, because it would be a scholarly discussion, but definitely the outcomes which are after the conclusion of this webinar would be shared with the public and would come into the public domain. And I assure, as a director of our center, that we will try to put it on the national agenda as such. We would give these recommendations and what are the outcomes are there. Definitely, we are going to send it to the not only to the UT administration, but to the central government departments are concerned. More so, the issues which you may raise today would give us further chances and opportunities to go deep into the research, because we are basically the academicians and the researchers. So we would go deep into those very particular aspects and research it, try to find out that what is the real situation in that way. So once again, you are all welcome, and big thank you to all of you that you have joined this webinar. Over to Neharika. Thank you very much.
नमस्कार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। डॉक्टर निहारिका जी और प्रोफ़ेसर जसबीर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि जो ये ताउन हम शुरू कर रहे हैं, मतलब एक कोलैबोरेशन, तो ये आगे तक और जाएगी और हम इसमें और भी जो पहलू हैं जम्मू-कश्मीर के, वो हम आगे सामने लाएँगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के बारे में। ये जो राष्ट्रीय कला केंद्र है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ये जो है ये जो ऑटोनमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है ये, और जो हमारा हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। उसके साथ-साथ हमारे जो है 8 रीजनल सेंटर्स हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स को कैटर करते हैं, वहाँ के आर्ट, कल्चर, लिटरेचर को। उसमें वाराणसी है जहाँ पर आगम और दर्शन के ऊपर काम होता है। गुवाहाटी, जो नॉर्थ ईस्ट स्टडीज़ है, उसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन को लेकर के वहाँ स्टडीज़ हो रही हैं। और बेंगलुरु, जहाँ पर सिविलाइजेशन और परफॉर्मिंग स्टडीज़ पर रिसर्च हो रहा है। रांची, जहाँ पर ट्राइबल स्टडीज़ का एक सेंटर है। पुदुचेरी, जहाँ पर आर्कियोलॉजिकल और एपिग्राफिकल स्टडीज़ हो रही हैं। त्रिशूर, जहाँ पर वैदिक परंपरा और परफॉर्मिंग स्टडीज़ पर काम चल रहा है। फिर गोवा, वहाँ पर इंटर कल्चरल रिलेशनशिप की बात होती है। और वडोदरा जो है, वहाँ मॉडर्न आर्ट एक सेंटर है वहाँ पर। और जो ये जम्मू कश्मीर का जो सेंटर की जो बात हो रही है, इसमें हम पूरे नॉर्थ इंडिया को हम देख रहे हैं। इसमें जो हिमालयन खित्ता है ये, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल को लेकर के, इस इससे रिलेटेड जो आर्ट, कल्चर, लिटरेचर की जो धाराएँ हैं, जो स्ट्रीम्स हैं, उनको हम जो है उनका डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च और पब्लिकेशन, और साथ-साथ में हम कार्य कर रहे हैं कि जो यहाँ की जनजातियाँ हैं, जो मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ हम एक एक डायलॉग हम स्थापित करते हैं। वो एक्ट एज़ अ कैटलिस्ट रादर, और वो इनिशिएट जो करते हैं, वो कम्युनिटीज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये बात है, हम ये जो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, वो वहाँ से आनी चाहिए, विदिन द कम्युनिटी से आनी चाहिए, ना कि उनके ऊपर थोपनी चाहिए। तो ये प्रयास है कि हम उस तरह का एक वातावरण हम तैयार करें, जिसमें कम्युनिटीज़ जो अपने जो उनकी जो मसाइल हैं, उनकी जो अच्छाई हैं, वो हम सामने लाएँ। और अभी जब बात हम कर रहे हैं गुज्जर बकरवाल की, तो अभी तक तो हम इनके मसाइलों को ही हम आगे उजागर करते हैं, लेकिन इनकी जो अच्छाइयाँ हैं, जो पूरे वर्ल्ड को एक दिशा दे सकती है, वो भी सामने लाने की ज़रूरत है। और इसमें मुझे लगता है कि जो ये पहल जो है, हमारी कम्युनिटी के जो नुमाइंदे हैं, वो ये पहल कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और अभी तक तो है ये जो है, ये जो एक ये जो स्टेट लेवल पर ही है, और इसको जो है नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर लाने की ज़रूरत है। जो इनका जो सरमाया है, जो इनका विज़डम है, जो उनकी नॉलेज है, हज़ारों सालों की, वो जो है वो पूरी दुनिया को पता चले। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और साथ-साथ में जो है, जो एमिनिटीज़ हैं, जिसे हम सब लोग चाहते हैं कि बेसिक एमिनिटीज़ मिले सबको, तो वो ये भी चाहते हैं, और उनको वो मिलनी ही चाहिए जो हर स्तर पर। उसमें वो फ़र्ज़ हम सबका फ़र्ज़ है कि हम जो ये हमारे जो रखवाले हैं, जो हमारे बॉर्डर्स के रखवाले भी हैं ये हमारे रखवाले हैं, जो हमारे जो जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं उसके रखवाले हैं। इन्होंने उसका दोहन नहीं किया, अगर किया तो हम सबने किया उसका दोहन। हमें 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 इनके इनके तो घर भी नहीं होते, ये तो गुमन तो हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर है। और जो ग्रीड है, जो जो एक सेल्फ सेंटर्ड जो हैं कम्युनिटीज़, मैं कहता हूँ बाकी सब हैं, ये उससे परे हैं ये सब लोग। और मुझे लगता है कि इनका जो हमें और अधिक सम्मान करने की आवश्यकता है, इनको इसको नेशनल स्ट्रीम में तो लाने की बात है ही है, और इनको इन्वॉल्व करने की भी बात है। ये जो हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं। और जहाँ गुज्जर बकरवाल की बात है, गुज्जर बकरवाल को हम जब हम स्टेट में यहाँ देखते हैं, तो हम महदूद एक दायरे में देखते हैं इनको, जम्मू कश्मीर को लेकर के। जैसे प्रोफ़ेसर जसबीर सिंह जी ने कहा कि गुरदासपुर की बात हमने करी, गुरदासपुर तक जो है पूरा जो नॉर्थ इंडिया है, तो नॉर्थ इंडिया में जो मूवमेंट है गुज्जर बकरवाल का है, हमें हमें जो है एक उस दायरे में इनको देखना चाहिए। अगर हम हायर हिमालयज़ की बात करते हैं, तो हायर हिमालयज़ में हम देखते हैं चमकाज़ है, ये है, फिर ब्रुकपाज़ है वहाँ पर, तो वहाँ पर उनकी मूवमेंट है। फिर हम देखते हैं जो लोअर हिमालयाज़, फिर शिवालिक में जो फिर गुज्जर बकरवालों की मूवमेंट है। तो ये मूवमेंट जो है, ये हमें उसको एक वसी दायरा मिलता है, और वो उस दायरे में देख कर के इन सबको हम स्टडी करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो हमारे जो गुज्जर बकरवाल जो भाई हैं, वो भी पूरे इस माहौल में, जिस माहौल में वो जो है वो बसते हैं, वो मूवमेंट उनकी रहती है, तो वो उसका वो अध्ययन हम सबके सामने लाएँ, तो उससे एक नई चीज़ें सामने आएगी, और उसमें जो है एक इंटीग्रिटी भी सामने आएगी, पूरे देश की इंटीग्रिटी भी सामने आएगी। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने शॉर्ट नोटिस पर जो है आप यहाँ पर आए, इसमें आप शमूलियत कर रहे हैं। हम बाजी साहब, बाजी खुर्शीद अहमद साहब,
जो है राना यूनिस जी, इरशाद अहमद साहब, बिलाल जमान साहब और शबीर अहमद पासवाल साहब। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने पहले भी जो है कई प्रोग्रामों में हमारे साथ शिरकत की और हमें ज़हनियाब करवाया, जो आपके जो वसाइल हैं, जो जो जिसे पूरी दुनिया ज़ैब हासिल कर सकती है। तो और मुझे लगता है कि इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म जो हमें इस तरह से मिल रहा है यूनिवर्सिटीज़ के प्लेटफ़ॉर्म पर, तो यहाँ पर एक डायलॉग शुरू होगा, नया एक इंटरेक्शन शुरू होगा और मुझे लगता है अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे भाई हैं, वो भी पढ़ लिख रहे हैं, वो भी एकेडमिक सर्कल्स में आ रहे हैं, तो हमें अच्छी ज़्यादा मालूमात सामने हमारे पर आ रही है और पॉलिसी प्लानर्स के लिए भी ये एक फाउंडेशन बन सकता है, जिससे हम आगे फर्दर उसको टेक अप कर सकें। मैं ज़्यादा वक़्त ना लेते, मैं गुज़ारिश करूँगा जो हम हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, जी हेलो, जी जी। शुक्रिया, शुक्रिया। ये मैं सबसे पहले गुज़ारिश करना चाहूँगा बाजी खुर्शीद अहमद खताना साहब से, वो हमें मुखातिब करें। बाजी खुर्शीद अहमद खताना साहब जो हैं, वो चिनाब पहलगाम के रहने वाले हैं, पहलगाम अनंतनाग के। इनका ही इज़ एमए इकोनॉमिक्स और वो जो आजकल जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग है और इनकी जो हॉबीज़ हैं, वो है रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक इन हायर लैंड पास्चर्स, वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ माइग्रेटरी कम नोमैडिक पीपल ऑफ जे.एंड.के, स्पेशली एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सर्विसेज़ में। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है कम्युनिटी के लिए और हम आज इन्हीं से सुनना चाहेंगे, जो जो सोशो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो पस मंज़र है, जिसमें जो गुजर बकरवाल उनका है, तो वो हमें इसके बारे में हमें बताएँगे। अ, बाजी खुर्शीद खताना साहब। बाजी साहब आपका माइक ऑफ है। जी, जी, आप ठीक है। आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जो मेरा आज का टॉपिक है वो हिस्टोरिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी। सर, द बकरवाल community is listed as scheduled tribe along with Gujars in Jammu and Kashmir in 1991. As a nomadic tribe, they spread over a large part of starting from Pir Panjal range to Hindu Kush to Ladakh, located in Himalayan mountains of South Asia. They are goat herders and shepherds at large and seasonally migrate from one place to another place. With their herds. The Gujars and Bukurwalas, the Gujars and Bukurwalas is the third largest ethnic group in Jammu and Kashmir. They are the state's most populous scheduled tribes. The Gujar and Bukurwalas make up around 20% of population of the state. Almost all Bukurwalas and many Gujars are nomads. The Gujars are ethnic group in India, Pakistan, and Afghanistan. Alternative spelling include Gurjara, Gujjar. The spelling of Gurjara or Gurjar is preferable to the rest. The Gujars go cow, cattle, mainly buffaloes, and the Bukrwalas, bakri, goat, horse, sheep. The sociologist G.S. Gore believes that the name Gujar is derived from principal occupation followed by the tribe cattle breeding. The Sanskrit word for cow is gau, and the old Hindi word for sheep is gadda. So Gujar has come from Gujar, which is Sanskrit word according to Sanskrit dictionary. The word Gurjar predicts the qualities of warrior community. The Gujars are divisible into two groups. Those who practice
transhumanists and oscillate with their rewards herds between the alpine pastures, margas, and the low altitudes of Swalikis and Jammu plains. The sedentary Gujars who settled in the most of the villages situated along the annual routes of migration. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. The sedentary Gujars who settled in the most of villages situated along the annual routes of migration. These sedentary Gujars claim as a common and collaterally ancestry. In the opinion of sizable number of social scientists, they are descendants of Gujars who inhabited a territory between Black Sea and Caspian Sea, south of mountains. If the above opinion is taken correct, then it can be said that the Gujars, under certain pull and pressure factors, migrated from their original inhabited to India through Iran, Central Asia, and Afghanistan. They entered the Indian subcontinent through the passes of Hindu Kush, Suleiman, and Khartar ranges. Some Gujars claim that Gujars caste is related to the Chechenians and Georgians and argue that Georgia was traditionally called Gujaristan. They believe that their ancestors came from Georgia, which they believe who was once called Georgia Gujaristan, a Central Asia republic formerly in Soviet Union. These cow herders are supposed to have migrated from Georgia to India through Iraq, Iran, Afghanistan, and Balochistan before settling in Gujarat, a district in Punjab, Pakistan. A.R. Khan, in his book Kashmir, Land and People, has mentioned that Gujars have been the inhabitants of Georgia, a territory lying between Black Sea and Caspian Sea, who left their territory under certain compulsions and through Central Asia, Iraq, Iran, and Afghanistan, crossed the Khyber Pass to enter into Indian subcontinent, and settled in Gujarat, where from they migrated to Punjab, Kagan, Swat, Hazara, Gilgit, and Valley of Kashmir. Around 4th and 5th centuries, they occupied the territory around Mount Abu Peninsula of Khatawad, Gujarat, and adjacent hilly tracts of Arvelias. Later on, facing serious drought conditions, they migrated from southwest southern parts of Rajasthan and occupied the plains of Punjab. Gujars of Jammu and Kashmir are supposed to have come from Rajasthan and adjoining areas of Gujarat, Kathiawar, because they become victims of famine in their previous homeland. Subsequently, they occupied green pastures of Swalikas and the Himalayas in the state of Jammu and Kashmir. The Gojri language is now recognized to be a form of the Rajasthani language. Their language is also known as Perimua of Hindiki and wholly different from Kashmir and the Dogri language. They really intermix with Kashmiris through like them. They are Muslims by religion. In appearance, the Gujars are sharp-featured, tall race. They are simple, less educated, and inoffensive people. Their good faith is
proverbial and they are genius people. It is believed that the researchers that they have entered Jammu and Kashmir into two waves, one directly and other some spell of settlement on Patwar, Pilecho in Punjab of undivided India and Pakistan. Most of them settled along with the old Mughal route in Sialkot, Gujranwala, and Jahilem in Pakistan, and Bimbar, Nowshera, Kalakot, Rajouri to Kashmir via Shupian and other the hills from Poonch to district Baramulla and Muzaffarabad. Traditionally, Poonch has been their cathedral, followed by Riasi and Jammu districts. In Kathua district, the Kandi area is occupied by Bukarwalas during the winter when they return from their high altitude pastures. On the basis of their occupation, the Gujars may be divided into two groups. Cultivators who are sedentarized on the slopes and side wall like Naranag, Vangat, Daksum, and the Gujars who participate migration transhumanists. The second category is further subdivided into Binyaras or Dodi Gujars, that is milkmen, and the Bukarwalas who rear sheep and goats. The Binyaras or the Dodi Gujars tend buffaloes, sell doodh, milk and milk products. For this reason, they are known as Dodi milkmen. They live in banas. The Gujars, Bukarwalas keep herds of goats owing to which they are called Bukarwalas. The Bukarwalas seasonally migrate from lower altitude to the alpine pastures of Himalayan in summer and descend the lower altitudes in winter season. The Binyaras Gujar who keep buffaloes move within a short distance of about 50 kilometers from their base in a year. Some of the Binyaras and Bukarwalas supplement their income from agriculture and forestry. All the tractors of Gujar Bukarwalas in the state Jammu and Kashmir start from their winter bases situated between 600 and 1200 meters above the sea level. South of the towns of Rajouri, Riasi, Udhampur, and Samba. Although there are numerous passes in the Pir Panjal range, and they follow either the Pir Panjal route of Banal Pass route, a brief description of these routes and the intervening pastures and the problems they confront have been given in the following paragraphs. The Pir Panjal route, the kafilas of Gujar Bukarwalas who follow in Pir Panjal route start from their winter pastures in the third week of April and take about 60 days to reach the Doku summer pastures. Out of 60 days, 20 days are journey days and 38 days are halt days. The Banal route, another route. The second important channel through which the Gujar Bukarwalas migrate from winter to summer pastures and back in the Mahanal Pass route around 20 April, and they commence their journey from Khangrial and it is and up to Dokus summer pastures. They break journey at 12 place. Economy and society. The Gujar Bukarwalas have divided themselves into principal kinship groups. The Dera, the household, the Dera is basic unit of social structure among the Gujar Bukarwalas. They count their numbers and describe their grazing and kafla groups in terms of
number of deras. A dera usually comes into existence when a person establishes an independent household, which happens normally after his marriage. Each son thus establishes his own dera as gets married. A dera usually consists of 5 or 6 members. There is a division of labor among the members of the household on the basis of sex and age. Acha. Dada Poti, the Kotra, the entire Gujar Bukurwal community is divided into a number of Gotras, that is clans. The members of a clan are the descendants of a common ancestor. The Gotra system has been borrowed from their Hindu Gujars. The Gotra name is often suffixed to their names. The primary functional group among the Gujar Bikurwals is the herding unit. A herding unit is based on several deras, households, which is helpful to efficient grazing and care of flocks. The size of flocks determines the size of herd units. If the size of flock becomes larger, it affects the efficiency of grazing and health of flock. In such cases, some of deras prefer to break away from herding units. And when the size of flock is reduced considerably, it joins the original herding units. The kafla is the second important functional group among the Gujar Bukarwals. A kafla is a group of families which move together during the seasonal migration and submit to the authority of kafla leader at least for a period of annual migratory cycle. The Gujar Bukarwalas have established an institution of Jirga Panchayat. The Jirga decides the disputes among its members. By faith, the Gujars and Bukarwalas are the followers of Islam. They expect, accept and observe the basic principles of Islam. Within the limits defined the general tenets of Islam, they are free to develop and elaborate their ceremonies, customs as an folk system. The main religious activities and festivals observed by Gujar Bukarwal are 5 times prayers, fasting in month of Ramadan, Eid al-Fitr, Eid al-Zuha, Nowruz, and Bisakhi. They start their upward journey after celebration of Bisakhi festival in April. During the course of an annual migration, they pass in Shashasanas, money, shrines, and graves of peace. The sex ratio of Gujar Bukarwal is highly estimate. They are approximately 856 women per 1,000 men among Gujar Bukarwals. This demographic imbalance has a direct bearing upon their marriage pattern. The ceremonies connected with marriage have been directly influenced by their mode of life. Among the well-to-do Gujar Bakurwalas and the Mangni engagement ceremony is generally held at early age, and the Nikah marriage usually takes place after 5 years from the date of engagement. Marriages generally take place during the summer season where everyone has more time to spare. Thanks.
सुरेंद्र जी, आप मुझे इजाजत है, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। शुक्रिया 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 आपका, बहुत बहुत शुक्रिया बाजी खताना साहब। थैंक यू वेरी मच बाजी खताना साहब फॉर गिविंग डिटेल and scholarly overview of the Gujar Bakarwal community. You talked about history, etymology, economy, and also the customs, traditions of the community. आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने डिटेल में इन सब चीजों पर रोशनी डाली। इन सब मैं वापस आके फिर जुड़ जाऊंगा सर आपके साथ। जी जी जरूर जरूर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अब जो हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं वो हैं श्री राना यूनिस अबरार जी हैं नेक्स्ट स्पीकर, एंड ही विल बी टॉकिंग ऑन अबाउट गुजर बकरवाल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। Rana Abrar Yunis Khatana belongs from Lola Valley, district Kupara में जो Lola Valley है. He is a broadcaster, poet, writer, journalist, columnist, and social activist. He is currently working as editor of the Gojri literary magazine Roda de Kom. He has participated in many educational and literary conferences, seminars, and has written many papers and given presentations and talks for All India Radio. Now I request Shri Rana Yunis Abrar Sahab to address us. Hi everybody. Good afternoon. Sat Sri Akal, Assalamu alaikum, आदाब। और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट और जम्मू यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया और यहाँ पे बोलने का मौका दिया। जैसा कि मुझे हुक्म हुआ था कि मैं गुजर बकरवाल की जो हिस्ट्री है और बैकग्राउंड, हिस्टोरियन बैकग्राउंड, उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालूं। मैंने ब्रीफली ये सारा, क्योंकि गुजर बकरवाल की हिस्ट्री जो है वो काफी वास्ट है, लेकिन मैंने ब्रीफली एक नोट बनाया है और रिटर्न भी बनाया है, मैं वो आपके सामने पेश करूंगा। बहुत शुक्रिया। गुजर बकरवाल जनूबी एशिया का एक ऐसा कबीला है जिसकी एक अलग पहचान और सुनहरी तारीख है। इस तबका की तारीख कई सदियों पर फैली हुई है, ताहम अक्सर मौरखीन ने उनकी तारीख में रद्दोबदल करके उसको मसख करने की कोशिश की है। ताहम इसके बावजूद भी ऐसे बेशतर तारीखी शाहिद हैं जो इस बात की जो इस तबका की सुनहरी तारीख को उजागर करते हैं। जम्मू कश्मीर में गुज्जर तबका को एक अजाफी नाम यानी गुज्जर बकरवाल कहकर पुकारा जाता है, लेकिन दरअसल ये एक ही तबका है जिसको महज पेशे के एतबार से दो तरह के नामों से जाना जाता है। कुछ आर्टिकल्स में ऐसा भी पढ़ा गया कि गुज्जर लफ्ज गाय से निकला है, जबकि बकरवाल बकरी से, और एक तरह की तर्ज माश की वजह से यानी लिवलीहुड की वजह से उनकी पहचान इकट्ठी हो गई है। अलबत्ता ये इस किस्म की मनगढ़ंत हवालाजात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। गुज्जर और बकरवाल असल में एक ही तबका यानी गुज्जर है, जिसको दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मामूली फर्क के साथ इसी नाम से तारीख में भी लिखा गया है। और गुज्जर, गोजर, गर्जर, गजर, गोदर या कोचर, दरअसल ये एक ही तबका है। अलबत्ता जम्मू कश्मीर और भारत के दूसरे हिस्सों और पाकिस्तान में जो गुज्जर खाना बदोशी की जिंदगी गुजारते हैं और अपने पेशे के एतबार से सहूलत के लिए बकरियों भेड़ों के रेवड़ पालते हैं, उन्हें इस पेशा की वजह से बकरवाल कहकर पुकारा जाता है। हमारे ऐसे कालम नवीसों और स्कॉलरों को ऐसी बुनियादी बातों पर तवज्जो देने की जरूरत है। ऐसी कोई भी बड़ी या मुस्तनिद बुनियाद नहीं जिस पर गुज्जर और बकरवालों को अलग किया जाए, क्योंकि उनका कल्चर, ज़बान, सकाफत, गोते यानी सब कास्ट्स बिल्कुल एक सी हैं। गुज्जर बकरवाल तबका अब इस कदर तालीम याफ्ता और बाशूर हो चुका है कि वो अपनी तारीख जानने के साथ साथ अपने हिस्ट्री की गुमशुदा कड़ियों को ढूंढने और बाकी मांदा या मौजूद तारीख पर फख्र महसूस करते हैं। गुज्जरों की तारीख उनके अरूज यानी राइज और अरूज से जवाल की तरफ आने की वजूहात जाहिर करती है। अब हम गुज्जरों की तारीख की जानिब आते हैं, जो असल में मेरा आज का टॉपिक है। गुज्जर न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मशरक़ वस्ता यानी सेंट्रल एशिया की कंट्रीज बशमूल ईरान, इजिप्ट वगैरह और रशिया तक फैले हुए हैं, और हर जगह थोड़े बहुत या मामूली फर्क के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बेशतर इसके वो गुज्जर या गोजर जैसे नाम के साथ ही पुकारे जाते हैं। गुज्जरों की इब्तदा और भारत में आने से मुतल्लिक हिस्टोरियंस की अलग अलग आरा हैं। कुछ के नज़दीक वो सिर्फ हिंदुस्तान के ही बाशिंदे थे, और कुछ का ये मानना है कि वो सेंट्रल एशिया से हिजरत करके या माइग्रेट होकर हिंदुस्तान में दाखिल हुए। और जो मौरखीन का तबका इस बात पर जोर देता है कि वो गालिबन 5वीं या 6ठी
सदी ईस्वी यानी 5th और 6th सेंचुरी में आबाद हुए होंगे। हिस्टोरियंस का वो तबका जो इन्हें भारत का असली बाशिंदा मानता है, उनके मुताबिक वंशी फिरकों ने महाभारत की जंग के बाद गुजरों से अलहाक कर लिया। इस जंग से पहले खश्तरी वाहिद हुक्मरान हुआ करते थे, लेकिन जंग के बाद उनकी ताकत और असर और रसूख में कमी आ गई थी। कृष्ण जी ने कुछ खश्तरियों के साथ जो महाभारत जंग में बच गए थे, मिथिला को छोड़ दिया और मगरब की तरफ द्वारिका चले गए। कदीम कश्तरी कबीले में सूरजवंशी आते हैं, चंद्रवंशी या यादुवंशी आते हैं। और उन्होंने कदीम कश्तरी कबीले कृष्ण जी के गिरद जमा हुए, जिन्होंने उन्हें एक तबके में मुतहद किया। कृष्ण जी ने उन्हें एक तबके में मुतहद किया यानी जोड़ा, और उसका नाम गुजर रखा और उसको हुकूमत गुजरात का नाम दिया, जिसकी पहली राजधानी द्वारिका में कायम की गई। ये उन मौरखिन का मानना है, उन हिस्टोरियंस का मानना है जो गुजरों को भारत का असली बाशिंदा मानते हैं। और बनारस के मशहूर पंडित वासविद्यु प्रसाद ने कदीम संस्कृत अदब के जरिए यह साबित कर दिया है कि लफ्ज गुज्जर कदीम चीजों के नामों के बाद बोला जाता था। एक और संस्कृत आलम राधाकांत की राय है कि गुज्जर खश्तरियों के लिए साइंसी एक और संस्कृत आलम, माफ कीजिएगा, राधाकांत की राय है कि गुज्जर खश्तरियों के लिए है, यानी ये लफ्ज खश्तरियों के लिए बोला जाता है। साइंसी शवाहद ने भी ये बात साबित की है कि गुज्जर आर्याइयों से ताल्लुक रखते हैं। हिंदुस्तान से बाहर से आने वाले मुसलमानों की आमद से पहले उनको संस्कृत तारीख और लहजे से मालूम होता है कि वो गुज्जर थे। यहाँ तक कि अरब हमलावरों ने भी अपनी तारीख और अपनी तहरीरों में उनका नाम गुज्जर ही लिखा है। हिंदुस्तान के मशहूर मौरख बीजनाथपुरी ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ गुजरस एंड प्राथारस में, एक और मौरख मिस्टर के एम मुंशी ने अपनी किताब द ग्लोरी ऑफ गुज्जर देश में, राणा अली हसन चौहान ने अपनी किताब शाहान गुज्जर और गुजरों की तारीख, और जनाब जतिंदर कुमार वर्मा ने अपनी किताब गुजर्स हिस्ट्री में तारीखी रिकॉर्ड के जरिए पूरी तरह से साबित किया है कि उनका ताल्लुक आर्याई खानदान यानी आर्यन से था, और इस बात की तरदीद की है कि बाहर से आकर यहाँ आबाद हुए थे। 78 ईस्वी में उन्होंने 2 खानदानों की सल्तनतें कायम की थी, जो नागर और किशान की थी, जिनमें एक पटना पर हुकूमत करता था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आर्यावर्ता का वस्ती हिंदुस्तान शामिल था, जिसका सरबराह महाराजा सबाउनगर था। उनकी दूसरी सल्तनत पेशावर की थी, जो दरिया जमुना और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। इस सल्तनत पर कुशान गुजरों के खानदान की हुकूमत थी, जिसका बादशाह कनिष्क था। बादशाह कनिष्क के दौर में सबाउनगर आर्यावर्ता अपने अरूज पर था। उन सल्तनतों ने अपनी तजारत को यूरोप तक फैला रखा था। महाराजा कनिष्क का गुजर दौर वस्ती एशिया तक फैल चुका था, जिसके नतीजे में गुजरों को रूस, अफगानिस्तान और ईरान में भी देखा जा सकता है। कनिष्क ने 78 से 130 सदी ईस्वी तक हुकूमत की। नगर और कुशान गुजर हुकूमतों के जवाल के बाद 5 सदी ईस्वी में गुजरों ने दोबारा इक़्तिदार हासिल किया। 9वीं सदी ईस्वी के बाद अरब सयाहों ने गुजर और उनकी बहादुरी की तारीफें लिखी हैं। जो अरब सयाह हिंदुस्तान आते थे और उन्होंने क्योंकि गुजरों का उस वक्त यहाँ पे बोलबाला था, और उन्होंने भी अपनी जो तारीख है उन्होंने गुजरों का जिक्र जो है वो किया है। हालांकि अरब उनके मुखालिफ थे, अलबत्ता वो गुजरों की ताकत को तस्लीम करते हैं। हिंदुस्तान में सदियों तक एक साथ हुकूमत करने के बाद मुस्लिम हुक्मरानों के बाद उनका जवाल शुरू हुआ। 1697 में अलाउद्दीन खिलजी ने अनालवादा गुजरात पर कब्जा कर लिया, जिसके नतीजे में गुजर राज का खात्मा हुआ। हिंदुस्तान में वो सब इलाके जो गुजरों के हुक्मरानों के थे, उनसे छीनकर दूसरों के जेर कर दिए। उन्होंने अपने इलाके छोड़कर पहाड़ों और रेगिस्तानों में पनाह ली। गुजरों को बेरहमी से दबाया गया, उन पर जुल्म किया गया। इन खराब दुश्मनी के हालात में गुजरों ने अपनी
पहचान छुपाना शुरू कर दी। गुजर अपनी हिफाजत के लिए भाग गए और जो बच भी गए उन्होंने गुजर कहलवाना पसंद नहीं किया। उन्होंने अपने आप को गुजरों के अलावा बरादरियों में तकसीम कर लिया। बाद में कुछ फारसी मौरखीन ने उन्हें राजपूत की कहकर पुकारा क्योंकि वो अपनी शनाख्त में नाकाम रहे थे। यहाँ तक कि अंग्रेज हुक्मरानों ने भी उन्हें राजपूत तस्लीम किया। गुजर बरादरी की अंदरूनी तंजीम इस वक्त भी जो है वो मजबूत है। बड़ी तादाद में रहने वाले गुजरों के मुख्तलिफ ग्रोह गुजर कहलाने पर फख्र महसूस करते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, गुजर मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ मेहरबान हैं और एक दूसरे से कोई भी नफरत नहीं करते। थैंक यू। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया राना यूनिस अबरार साहब। आपने तवारीखी पस मंजर पर रोशनी डाली गुजर बकरवाल से रिलेटेड, जो तवारीख पस मंजर है। और जो है, जो मुझे लगता है कि जो गुजर बकरवाल हैं वो जो है, जो हिंदुस्तान की जो है सनातन और वैदिक परंपरा के सानी है वो। और कई दौर आए हैं, कई दौर गए हैं, लेकिन जो जो आपने जो ये पहचान बना रखी है, जो गुजर की पहचान बना रखी है, अभी भी कायम है। और और ये जो आपने तारीख का हवाला दिया, इससे जो हमें और भी फख्र महसूस होता है कि हमारी कितनी पुरानी तारीख है और तवारीख है, और उसके साथ हम जुड़ रहे हैं। तो ये भी एक फख्र की बात है। और मुझे लगता है कि इसमें और भी तहकीक करने की ज़रूरत है, कि जिसमें हम जो है, जो पूरे ये जो है, जो खाली ये खित्ता ही नहीं, जम्मू कश्मीर का नहीं, इससे हम बाकी खित्तों से भी जुड़ जाएँ। और आपने बाकी जो है ममालिकों की बात करी, तो एक वसी पस मंज़र फिर बन जाता है इसका, जो है गुजर बकरवाल कमेटी से है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत देना चाहूँगा श्री इरशाद अहमद पासवाल साहब को। वो जो है, उनका जो टॉपिक है आज का, वो है रोल ऑफ कम्युनिटी इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस पर जो है इरशाद अहमद साहब बोलेंगे। और मुझे लगता है कि जो है, जो गुजर बकरवाल है, जो जो एक तवाज़ुन है इसका कुदरत के साथ, इनका एक बहुत बड़ा हाथ है कि उसको उसको कायम रखने में, और उस माहौल में, उस एनवायरनमेंट को। तो अब हम इन्हीं से सुनेंगे कि इनका रिसर्च इसके बारे में क्या कहता है। श्री इरशाद अहमद पासवाल साहब जो हैं, ये लोलाब से इनका ताल्लुक है, और ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल यूथ क्लब के। और इरशाद साहब जो है इनका जो हिस्ट्री में जो है इनका मास्टर्स है, और उन्होंने कई सर्वेज और जो एनालिसिस कंडक्ट की हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि वो हमें जो है इसके बारे में बताएं, ट्राइबल का जो रोल है एनवायरमेंट। इरशाद अहमद पासवाल साहब। थैंक यू सर, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। जो आज आपने इंटरेक्टिव वेबिनार सोशल इंक्लूजन अमंग ट्राइबल ग्रुप्स में जो आपने ऑर्गेनाइज किया, तो इसमें सबसे पहले मैं मिस्टर प्रोफेसर ऑन कर देंगे प्लीज। हाँ जी, आपका सर थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत भी है, तो थोड़ा टेक्निकल इश्यूज हैं सर, उस वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ सर। कोई बात। तो मैं थैंक यू करूँगा मिस्टर प्रोफेसर जसबीर सिंह सर को, और मिस्टर प्रोफेसर मनोज किधर, मिस्टर वरिंद्रा बांगरू सर, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज एक बहुत ही खास करके जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, इनके हवाले से एक ऐसे प्रोग्राम का इंतखाब किया है। शायद कि मुझे लगता है कि तारीखी प्रोग्राम है और इससे पहले ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं हुए हैं, और इसके लिए मैं फिर दिल की अथाह गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जैसे कि आज मुझे एक बहुत ही अहम और एक हसास मौजूद दिया गया है ट्राइबल कम्युनिटी के हवाले से, जैसे कि रोल ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है एनवायरमेंट कंजर्वेशन के हवाले से इस पर बात करनी है। तो ये एक ऐसा मौजू है जिससे कहीं ना कहीं ये तारीखी मौजू भी बनता है, और इस पे काम होना भी चाहिए। तो इस थोड़े से वक्त में, कलील वक्त में, मैं ज़्यादा जितने भी हमारे सामीन के दरमियान हायल ना होती हुए मैं सीधा मौजू की तरफ आना चाहूँगा। तो जैसा कि आज का मेरा मौजू है कि ये गुजर बकरवाल कम्युनिटीज़ के हवाले से इनका क्या रोल रहा है एनवायरमेंट कंजर्वेशन के हवाले से। सबसे पहले मैं ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा दूं कि जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है, ये दरअसल इंसानों की एक वो प्रैक्टिस है जिससे हम माहौल को जो दरपेश खतरा है उससे किस तरीके से अपने माहौल को बचा सके। दीगर अल्फाज में यूं भी कहें कि ये एक अम्ब्रेला है जिसके साए तले हम रहते हैं, और रहकर हम अपने माहौल को इन बाकी जो भी आफात हैं, जो ऐसे डिजास्टर हैं, इनसे बचाएं। तो क्योंकि हमारे पास एक ऐसा प्लेनेट है और वो एक अनमोल प्लेनेट है
एक जिसपे जिंदगी का गुजर बसर मुमकिन है, इसके अलावा हम कहीं रह नहीं सकते। तो इसलिए इसके ऊपर कुदरत ने बहुत सारी ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज पैदा फरमाई हैं, तो जिनकी हमें हिफाजत करना और जिन्हें हमें नुकसानात से बचाना, इसके लिए हमें आगे आने की जरूरत है हर किसी को। लेकिन अब जैसा कि यहाँ पे हम गुजर बकरवाल कम्युनिटी की बात करते हैं कि किस तरीके से इनका रोल रहा है इसको कंजर्व करने में, तो सबसे पहले मैं ये बताना मुनासिब समझूंगा कि इस वक्त ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस की बात करें हम, जिस तरीके से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, इस ड्रेन्स वगैरह कहीं पे, जैसा कि ये भी बताया गया है तहकीक, मतलब हमारे कुछ ऐसे रिसर्चर्स हैं कि ताजमहल के ऊपर भी ये इस ड्रेन हुई थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा शदीद नुकसान, यानी कि ऐसी सॉइल इरोजन हो रहा है, एक्सटिंक्शन स्पीशीज जो है खत्म हो रही हैं दिन ब दिन, और इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, और जो सी लेवल है, ओशन लेवल है, इनके अंदर बढ़ावा दिन ब दिन हो रहा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, और इस तरीके से बाकी ये सब चीजें हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे बात करें कि इस चीज को किस तरीके से गुजर बकरवाल कम्युनिटी एक नहज पे बरकरार रखी हुई है और किस तरीके से वो माहौल के साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मरकजी ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मुख्तलिफ कबाइल के लोग मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ी आबादी गुजर बकरवाल कबीला की है, जो आमतौर पर खाना बदोशी वाली जिंदगी गुजारते हैं, जिनका ज्यादातर ताल्लुक जंगलाती इलाकों, चरागाहों, पानी, चश्मों, नदी नालों, झीलों, झरनों और ताजा आबो हवा से मुंसलिक है। और इसीलिए इस तबका की मईशत का भी बराह रास्त ताल्लुक जो है, ये सीजनल खेती बाड़ी, कुदरती जड़ी बूटियों पर मुनसर है। और इस तरह ये कबीला जो है इस अपनी परंपरा को, इस अपनी रवायती इस तमद्दन को बरकरार रखते हुए साल के 12 महीनों में 6 माह रवायती खाना बदोशी पहाड़ों, बैकों, डोकों और बालाई इलाकों में अंजाम देता है। और यही वो मनफरद कबीला है जो अपने रवायती अंदाज में इस माहौल को साफ और शफाफ बनाने में और अपने नहज पर बरकरार रखने में एक अहम किरदार अदा करता है। ये लोग बहुत ही इको फ्रेंडली लोग होते हैं। जंगलात और माहौलियात के वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ और निगहबानी करने वाले लोग ही दरअसल गुजर बकरवाल कहलाते हैं। और गुजर बकरवाल तबका का माहौलियात से इतना पुराना रिश्ता है, न सिर्फ पुराना रिश्ता है बल्कि फ्लोरा और फाना इनके दिलों में पेवस्त है, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये लोग जहां जंगलात और चरागाहों को अपनी माश व रहाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से अपने माल मवेशी, अपनी औलाद को एक प्रोटेक्शन देते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, इसी तरीके से ये एक एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देना अपना फरीजा समझते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से हम बात करें कि दौरे हाजिर में जो हमारे गुजर बकरवाल तबका से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, इनकी जो ये सीजनल माइग्रेशन करते हैं, हिजरत करते हैं, तो इसके हिजरत के दौरान इन्हें क्या होता है, अगर हम सबसे बात करें कि जंगलों के अंदर चले जाते हैं, तो इनका रहायश, इनकी रहने की जगह, इनकी खाने पीने की जगह एक दरख्त, एक पेड़ पौधा ही होता है। तो उसके नीचे ये जब बैठ जाते हैं तो उसको इस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ देना समझते हैं, क्योंकि बाद हमारे जो रिसर्च के जो हमारे हम ऐसे कबायली लोगों से जुड़े, खुद में इसी कम्युनिटी से हूँ, और हम जुड़ते हैं, जब देखते हैं ऐसे कुछ वाकयात भी आते हैं कि जब किसी जगह पे जिस दरख्त की या जिस पेड़ पौधे के नीचे इनका ठिकाना होता है, तो अगर किसी कुदरती या आफती वजह से उस वो पे जल जाए, यहाँ वहां पे उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाए, तो ये लोग इसी तरीके से बदस्तूर रोते हैं जिस तरीके से, यानी कि इनका घर जल गया हो, इनका घर उजड़ गया हो, क्योंकि इन्हें इतना ज्यादा इन चीजों से प्यार है। तो इस चीज को लेके ये लोग डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बल्कि इसकी प्रोटेक्शन करते हैं। और तहकीक में ये चीजें भी सामने आई हैं कि जिस जिस जगहों से इन गुजर बकरवाल लोगों की चलना हुआ, गुजर हुआ है, वहां पे पेड़ पौधे ज्यादातर पाए जाते हैं, क्योंकि ये इनको प्रोटेक्शन देते हैं और वहां पे पेड़ पौधे नए लगाने की कोशिश करते हैं। तो और साथ में अगर हम इस वक्त दौरे हाजिर में बात करें कि किस तरीके से ये एनवायरमेंट के तहफ़्फ़ुज़ में अपना अहम फरीजा अदा करते हैं, जिस तरीके से आप हम ये बात करें कि दौरे हाजिर में इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर जो है, जो फैक्ट्रीज हैं, दिन ब दिन ज्यादा बढ़ावा हो रहा है, बढ़ रही हैं, लेकिन ये लोग इस दौरे हाजिर में भी, इस जदीदियत के दौर में भी अपने उसी पुराने पेशों से, जिस तरीके से अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर की बात इस वक्त में, ये लोग
हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो। जी जी आ रही है, आ रही है। तो वही मैं बात कर रहा था कि इस वक्त में भी इस जदीदियत के वक्त में भी जिस तरीके से इन लोगों के पास यह है कि अगर हमारे बाकी सेक्टर्स की बात करें, बहुत ऐसी फैक्ट्रियां जिसमें कपड़े बनाए जाते हैं और उससे क्या होता है कि हार्मफुल गैसेस वगैरह निकलते हैं और इस तरीके से बाकी केमिकल्स निकलते हैं, बाकी चीजें हो जिससे हमारा आबो हवा बहुत आलूदा हो जाता है। लेकिन ये उस चीज को छोड़कर इस चीज को तरजीह देते हैं कि यानी आज भी इनके पास चादरें पाई जाती हैं जो घरों के अंदर बनाते हैं और आज भी इनके पास इस तरीके से पच्चियां होती हैं जो घास की बनाते हैं। और अगर हम इसके मुकाबले में दूसरी बात करें कि हम आटा वगैरह ये चीजें इसके लिए इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल, बाकी चीजों को मशीनरीज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये लोग आज भी चक्की का इस्तेमाल करते हैं जो पानी पे चलती है, जिससे जो इको फ्रेंडली होती है। और इस तरीके से हम बाकी अगर फर्टिलाइजर्स की बात करें जिससे मैरीन लाइफ इफेक्ट होती है, लेकिन ये लोग उसको छोड़ के अपने रवायती तरीके से मैनवर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। और बाकी लोगों की बात करें, वो रेफ्रिजरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, एयर कंडीशनर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये उन चीजों को छोड़ के आज भी एक पानी के ऐसे कौवे इस्तेमाल करते हैं, छोटे से गड्ढे खोद के जिनके अंदर ये अपना दूध वगैरह रखते हैं। यानी और इस तरीके से अगर ये प्लास्टिक को तो बिल्कुल ही नहीं इस्तेमाल करते। अगर जड़ी बूटियों की बात करें तो प्लांटों से, जो भी मेडिसिनल प्लांट से, उनकी जानकारी इनके पास बहुत ज्यादा है और उनसे इतना इनका लगन है कि आज भी पत्री, स्कोड़, गुच्छी, पलानी, रेवन, गुगलतूफ, कुठ, चित्राल और पुर जैसी जो चीजें और एंटीडोट्स चीजें इनके पास आज भी मौजूद हैं जिनके इनके बगैर कोई अच्छे तरीके से इसको नहीं जानता। इस तरीके से हम डायरी फार्म की बात करें तो इनके पास दूध, खिलाड़ी, मक्खन वगैरह जैसी चीजें मौजूद होती हैं और जो बिल्कुल नेचुरल होती हैं और जिस तरीके से जिससे बहुत बहुत ही इको फ्रेंडली होते हैं। यानी कि वक्त की कमी होने के वजह से मैं ज्यादा अपनी गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन मैं आप तमाम साथियों का बहुत मशकूर हूं जिन्होंने इस आज के मौजू पे हमें भी बात करने का मौका दिया। और हम उम्मीद करेंगे कि आइंदा ऐसे प्रोग्राम हो और इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे हो, और जिनकी वजह से ताकि हम अच्छे तरीके से अपनी कम्युनिटी की एक तर्जुमानी कर सकें और किस तरीके से वो इन मुश्किलात के एक साथ में ये बात मैं बता दूं कि इस वक्त भी हमारी कम्युनिटी की लिटरेसी रेट जो है वो 23 से 32 के आसपास है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी ये अपने रिवायती तमद्दुन, तहजीब, कल्चर के साथ रहकर, जुड़कर भी किस तरीके से इस माहौल को और किस तरीके से इस मुल्क के लिए अच्छा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस कम्युनिटी को आगे और ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाएगा ताकि ये कुछ आगे कर सके। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद साहब। आपने जो 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 चीजें हमारे सामने रखी, जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड, ये आज जो पूरी दुनिया है बहरान से गुजर रही है, और मुझे लगता है अगर हल है कहीं तो वो हमें आपके पास ही आना पड़ेगा, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के पास आना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आप जो है, आपसे हमें जो है एजुकेशन लेनी पड़ेगी कि हम कैसे जो मिनिमम बेसिक नीड्स हैं, अगर हम उनको लेकर चलेंगे तो वो सबके लिए है। लेकिन हमने अननेसेसरी जो हमने ये जो है, ये जो कमोडिटीज़ हम लेते हैं, तो उससे जो है एनवायरनमेंट के ऊपर तो असरात तो पड़ ही जाते हैं। तो हम उसका जो बेजा इस्तेमाल है वो आप लोग करते हैं। और मुझे लगता है कि जितनी भी रिवायतें आपके हैं इससे रिलेटेड, एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, इन पर और लिखने की ज़रूरत है, जिससे 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 दूसरे लोग जो हैं उससे एजुकेट हो जाएँ। और पर्टिकुलरली मुझे लगता है करिकुलम का पार्ट होना चाहिए कि जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है, जो हमारे जो जो कम्युनिटीज़ हैं, जिन्होंने हज़ारों सालों से उसको टेक अप किया हुआ है, इट शुड बी पार्ट ऑफ द एजुकेशन करिकुलम, सो दैट द चिल्ड्रन they can get educated, and in future they can apply these things in their day to day life. So this is very important, I believe, not only for this UT, but for the entire country and the world to follow. Now, and our next speaker is Bilal Zamzam Sahab. Bilal Zamzam Sahab will be talking about role of Gujar Bakrwal in resource building. बिलाल जमजम साहब जो है उनका ताल्लुक डोडा से है, डोडा जम्मू से है उनका ताल्लुक। इनका मास्टर्स उर्दू में है। ये राइटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं और एक्टिविस्ट हैं। ये
उनकी जो पोएट्री है वो जी और उन्होंने बहुत सारी जो है अवेयरनेस प्रोग्राम और जो है लेवल लेकिन है सब को जो है रोशनी डालें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं सबसे पहले आपकी पूरी टीम का दिल की अमीर तरीन गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने गुज्जर बकरवाल तबका को मौजू पे फिक्र बनाया और इस हवाले से बहुत अच्छा सेमिनार रखा। आप सबका मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा आज का मौजू है वसाइल की तामीर में गुज्जर बकरवाल का किरदार। मैं सबसे पहले अपने मौजू को शुरू करने से पहले एक दो अशार आपके सामने रखूंगा। रिंद लखनवी लिखते हैं कि जुल्फ़ों की तरह उम्र बसर हो गई अपनी, जुल्फ़ों की तरह उम्र बसर हो गई अपनी, हम खाना बदोशों को कहीं घर नहीं मिलता, हम खाना बदोशों को कहीं घर नहीं मिलता। और एक दो अशार और जो अपने लिखे हुए हैं। अपने घरों में हमने मवेशी पाल रखे हैं, अपने घरों में हमने मवेशी पाल रखे हैं, अपने साथ हमने और भी खुशहाल रखे हैं, अपने साथ हमने और भी खुशहाल रखे हैं। हकारत की नज़र से हमें देखते हैं जो, हकारत की नज़र से हमें देखते हैं वो, जिनके सामने हमने दूध के थाल रखे हैं। हकारत की नज़र से हमें देखते हैं वो, जिनके सामने हमने दूध के थाल रखे हैं। इसके बाद में अपने मौजू पे बयान करूं। दुनिया में बड़े पैमाने पे दो तरह के वसाइल पाए जाते हैं, इंसानी वसाइल और कुदरती वसाइल। इंसानी वसाइल मुख्तलिफ़ कामों को सरअंजाम देने के लिए इंसानों में किस कदर काबिलियत और सलाहियत होती है, मुख्तलिफ़ पेशों की नौइयत के लिहाज से लोगों में एक दूसरे से इम्तियाज़ किया जाता है। जब तमाम पेशों को बाहम एक जगह जमा किया जाता है तो इसी को इंसानी वसाइल कहा जाता है। कुदरती वसाइल जो कुदरत ने मुहैया किए हैं, वो कुदरती वसाइल पैदावार का ज़रिया हैं। वसाइल किसी भी कौम की हकीकी दौलत और सरमाया हैं। दुनिया में ऐसे ममालिक ने बहुत तरक्की और खुशहाली हासिल की है जहाँ इंसानी और कुदरती वसाइल मौजूद हैं। तरक्की और खुशहाली का इन्हिसार इन वसाइल की दानिशमंदाना और जहानत के साथ मुनासिब इस्तेमाल पर है। दुनिया में ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ इंसानी और कुदरती वसाइल मौजूद हैं, लेकिन मनसूबाबंदी और मेहनत मुशक्क़त के फुक़दान की वजह से इन वसाइल से फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। वसाइल तिजारत कारोबार के ऊपर परवान चढ़ाने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। वसाइल की तामीर में गुज्जर बकरवाल का बहुत अहम किरदार है। गुज्जर बकरवाल तबका कोई छोटा तबका नहीं है जो सिर्फ किसी एक मुल्क या रियासत तक की महदूद है, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में काफ़ी तादाद में गुज्जर बकरवाल तबका से तल्लुक़ रखने वाले लोग अपनी अलग पहचान के साथ रहते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तकरीबन हर रियासत में गुज्जर बकरवाल तबका के लोग रहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के आसपास के इलाकों में गुज्जर बकरवाल लोग रहते हैं। गुज्जर बकरवाल तबका की माशियत माल मवेशी, भेड़ बकरियां, खेती बाड़ी और दूध बेचने पर मुनहसर है। जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल तबका के लोग 12 महीने खाना बदोशी की ज़िंदगी बसर करते हैं और गर्मियों में अपने माल मवेशी के हमरा वादी कश्मीर और वादी चनाब के जंगलों पहाड़ों में अपने माल मवेशी के साथ गुजर बसर करते हैं और सर्दियों के 6 माह जम्मू के आसपास के इलाकों में डेरा डालते हैं।
जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में गुज्जर लोग जो है दूध, घी, मक्खन, पनीर और कलाड़ी का कारोबार करते हैं। गुज्जर तबका के लोगों ने दूध बेचने वाले जानवरों और बकरवाल तबका के लोगों ने गोश्त और ऊन देने वाले जानवरों के साथ एक अरसा से रिश्ता बनाए रखा है, जो आज भी कायम व दायम है। जैसे मैं दूध की बात करूं तो रियासत जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, इन जगहों पे दूध जो है, दूध का कारोबार सिर्फ ज़्यादा तादाद में गुज्जर तबका के लोग करते हैं और इनसे तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। वैसे ऊन है, जो ऊन की मैं बात करूं तो ऊनी कंबल, ऊनी चादर, ऊनी पट्टू, ऊनी टोपियाँ, ऊनी शाल वगैरह जो है वो ऊन से तैयार किए जाते हैं। इन चीज़ों को आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं और बहुत शौक से अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। ऊनी चादर, ऊनी कंबल मार्केट में जो आम कंबल हैं, इनसे कीमत के लिहाज से काफ़ी महंगे हैं, लेकिन इनकी उम्र 50 साल, 100 साल से भी ज़्यादा है। इनका रंग नहीं जाता, इनकी असलियत जो है वो कायम रहती है। बकरवाल लोग जो हैं वो भेड़ बकरियां ज़्यादा पालते हैं और भेड़ बकरियों की जहाँ तक मैं बात करूँ कि बकरी जो है, बकरी के ऊन से बहुत सारे काम जिनका मैंने जिक्र किया, ऊनी शाल बनते हैं, ऊनी कंबल हैं, ऊनी चादर हैं, पट्टू हैं और भी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है जो सिर्फ एक भेड़ की ऊन से तैयार की जाती हैं। बकरी की जहाँ मैं बात करूँ तो बकरी का दूध जो है वो भैंस के दूध से ज़्यादा मुफीद है, ज़्यादा कीमती है और ज़्यादातर दिमाग की कमज़ोरी जो है उसको दूर करने के लिए बकरी का दूध इस्तेमाल किया जाता है और बकरियों को भी गुज्जर बकरवालों ने महफूज किया है। बकरी के बालों से रंग बिरंगी किस्म के रस्से, सेलियां वगैरह बनाई जाती हैं, जो प्लास्टिक की सेलियों से जो है, प्लास्टिक के रस्सों से ज़्यादा खूबसूरत और मजबूत होती हैं। जी, आगे मैं बात करूं कि एक सर्वे के मुताबिक कश्मीर में, वादी कश्मीर में हर साल तकरीबन 22 लाख भेड़ जो है वो ज़बह होती हैं और जिनमें तकरीबन 50% से ज़्यादा जो भेड़ बकरियों का कारोबार है वो बकरवालों से, जिनकी वो तजारत का जो ज़रिया है वो बकरवाल और गुज्जर हैं। उसके बाद में आखिर में आपको जंगली जड़ी बूटियों के बारे में थोड़ा जिक्र करूं। जंगली जड़ी बूटियों के जिनकी पहचान और इस्तेमाल के बारे में गुज्जर बकरवाल लोगों को बहुत जानकारी है और तकरीबन हर किस्म की बीमारी पे जो है इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें लालड़ी, मदानी, कोड़, गुग्गल, चुराइता और मुख्तलिफ किस्म की और भी जड़ी बूटियां हैं जिनसे तकरीबन हर बीमारी का इलाज किया जाता है। जिगर गर्मी हो गई, जॉइंटिस हो गया, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को रोकने के लिए भी गुज्जर बकरवालों ने जो उसके लिए दवाई है वो जंगल से तैयार की है और उसके बारे में मुकम्मल जो है वो जानकारी रखते हैं। उसके बाद मैं बात करूं कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो गुज्जर बकरवाल है और गुज्जर बकरवाल के ज़रिए जो वसाइल पैदा होते हैं, जिन वसाइल को गुज्जर बकरवालों ने महफूज करके रखा है, वो जिनकी वजह से दूसरे लोग भी खुशहाल हैं। जैसे अगर जम्मू की मैं बात करूं तो जम्मू में दोधी गुज्जर जो हैं वो हर घर में जो है दूध प्रोवाइड करते हैं, कश्मीर में प्रोवाइड करते हैं, पंजाब में करते हैं, हिमाचल प्रदेश में करते हैं। दस्तकारी की जहाँ मैं बात करूं तो गुज्जर बकरवाल जो लोग हैं वो हाथ से जो शाल बनते हैं, टोपियाँ बनती हैं, वो बहुत कम मिलती हैं, लेकिन बहुत शौक से उनको जो लोग खरीदते हैं और अपने घरों में शौकिया तौर पे रखते हैं। मैं ज़्यादा इन्हीं अल्फाज से मैं अपने मौजू को ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, शुक्रिया बहुत बहुत आपने जो वसाइल हैं, जो कुदरत के, उनका सही बेजा इस्तेमाल जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इकॉनमी में आपका बहुत बड़ा योगदान है। रादर कि मुझे लगता है बाकी कम्युनिटीज आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आपका तो सीधा कनेक्शन कुदरत के साथ है, तो आप तो कुदरत के करीब हैं
और उसका सही इस्तेमाल आप करते हैं, और जो वहाँ की जो वन संपदा है, वो वहाँ जो प्रोड्यूस है, जंगल के प्रोड्यूस है, उसको भी आप सही इस्तेमाल करते हैं, आप रोज़मर्रा के काम में लाते हैं उसको। तो ये आपका बहुत बड़ा रोल है, इकोनॉमी में रोल है, कंज़र्वेशन में रोल है, बात में है, उसमें उसमें आपका रोल है। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अब मैं गुज़ारिश करना चाहूँगा श्री शब्बीर अहमद पासवाल से, जो है वो हमें मुखातिब करेंगे। शब्बीर अहमद पासवाल साहब जो हैं वो मनीगाम गंद्रवाल से उनका ताल्लुक है। ये एडिटर इन चीफ हैं खुराद कौम के। ये ऑथर, स्क्रिप्ट राइटर हैं। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर इनके प्रोग्राम्स आते रहते हैं। जो है मन की बात, जो हमारे पीएम साहब का उनका अलग-अलग ज़बानों में उनका हुए हैं तर्जुमे में, और उन्हें उनको नवाज़ा गया है, जो है अवार्ड से भी नवाज़ा गया है, जेके ट्राइबल अवार्ड, जो उससे भी नवाज़ा गया है लिटरेचर के फील्ड में। ये मेंबर हैं अदबी संगत कश्मीर के, और एडमिन हैं आवाज़ गुजर सोशल मीडिया नेटवर्क के। डॉक्टर शब्बीर अहमद पासवाल साहब से मैं गुज़ारिश करता हूँ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया श्री वीरेंद्र बांगरू जी। I will start my talk with this poetic reinforcement. चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो. Hello, I would like to welcome Honorable Director CSSEIP Shri Virendra Bangdu, Regional Director IGNCA Dr. Niharika, Professor Jasbir Singh ji, and all my fellow speakers and dear participants. So far in today's webinar, we have already discussed about the socio-historical background of Gujar Bakarwal, the role of tribal community in environmental conservation, and the role of Gujar Bakarwal in resource building. Now we will have a look at how modernization has impacted this community and what various schemes have been started towards their benefit and betterment. We all know that a country like India is a place to a variety of populations with their separate culture, traditions, and living styles. India is home to almost more than half of the world's tribal population. The pastoral nomadic community of Gujar and Bakarwals in India's northmost state of Jammu and Kashmir is always on the move, from the plains to the mountains in summer and from mountains to the plains in winters, along with herds of livestock, which is mainstay. The community has been struggling for the past 20 years for identity and recognition. Due to the nomadic nature of the community, they always had the least access to permanent houses and educational facilities. They were forced to be dependent majorly on forest resources and hence became forest dwellers, as a result of which they got secluded from mainstream society for ages. In earlier times, the community used to face blatant rivalry from the people of the area where they used to move and settle during the migration period. As they were majorly dependent on livestock, they used to face huge losses due to inclement weather conditions. Many a times they were also charged in lakh in order to seek permission to access the grazing areas for their cattle and sheep. In addition to this, there have been so many educational problems in tribal areas such as lack of infrastructure, absenteeism among teachers, negligent attitude of tribal students towards education, parental poverty, seasonal migration, lack of interest, and lack of parental motivation, etc. Change is as natural as life. When change happens by choice, we see it as an opportunity. When change hits an unexpectedly, we can also see it as opportunity to improve what needs improvement and change what needs to change. A change came in their lives too. After the years of suffering and struggles in April 1991, the government of India, while recognizing the backwardness of Gujar and Bakarwal community of Jammu and Kashmir, state declared them as a scheduled tribe through Scheduled Tribe Amendment Act. This was the first step towards their integration into mainstream society. They were more or less encouraged to come forward and have a say.
Gujar and Bakarwal are the third largest ethnic group in Jammu and Kashmir, constitute more than 11.9% of the total population of the state as per the census 2011. Scheduled tribe is the only community in the state which maintain its culture and heritage throughout the age. Various studies and reports indicate that socio-economic and educational status of Gujar and Bakarwal in Jammu and Kashmir is not at all satisfactory. The first initiative towards building confidence among the members of this community can be attributed to All India Radio, which started the first ever broadcast in Gojri language. The program helped in creating awareness among the community members regarding various opportunities available to them. Earlier, when reservation was announced by the then government, if any member of the reserved caste used to achieve a milestone of his her life, people instead of crediting the individual used to associate it to the reservation benefit. When different agencies like All India Radio, Doordarshan, and the like started to promote the Gojri language and the rich heritage of the community, people started to develop an empathetic attitude towards Gujar and Bakarwals. Also, a huge contribution by Adabi Sangat Kashmir was also made towards the promotion and a release of numerous books in Gojri language that motivated different exiting and budding writers of the language to come forward. Similarly, Anjuman Gojri Zaban Adab, an organization based in Rajouri, also started the first ever Gojri newspaper under the name Ruda Dekom, which was later converted to an e-magazine due to its overseas popularity. It was initiative to encourage the Gojri writers and poets to come up with their articles and also generated employment opportunities for the community members by embracing and highlighting their talents. There are many celebrated names from the community who managed to create a successful name for themselves at that time when nobody acknowledged the existence of Gujars. In the wake of modernization, Gujars and Bakarwals have transformed themselves extensively. Their pastoral and forest dwelling community, with the least access to basic life facilities, now started to make a name for itself. With the advent of technology, the community started to establish a connection with the outside world. Many of the families resorted to permanent home and stable livelihoods. The children who used to drop out of schools due to seasonal migration earlier now became regular attendees. Many of the tribal students have successfully qualified for reputed government services exams, and many of them are working as IAS and IPS, IFS, and similar other competitive exams. Modernization has also impacted their lifestyle. The people are now more inclined towards education and devising new ways through which they can integrate the modern way with traditional styles. The main livelihood of this community was dependence on animals. They used it to make earning by selling milk majorly. New technologies have helped them largely to increase production through modern techniques and thus earn an increased price as compared to before. If we are to compare the earlier lifestyle and today's lifestyle, we will find a huge development. Today, we will find many successful people hailing from Gujar and Bakarwal community enrolled in successful jobs. Another remarkable step towards in this direction was the recent announcement of tribal awards on the event of Republic Day 2022. Out of 26 awards, 17 awards were conferred to the tribal individuals for exemplary work in field of sports, education, culture, literature, and science and technology. These awards have generated a ray of enthusiasm among the tribal youths to showcase their talents. In a community wherein girls were married off at a very early age, we can now find an orientation towards girl education. We have names like Tahira Rahman, first Gujar girl from JK to join Indian Air Force, Dr. Rehana Bashir, Dr. Ruwaida Salam, first Gujar girl to crack IAS, IPS, Iram Shamim, first Gujar girl to get admission at AIMS at Stock. Also, the community is now more oriented towards enrolling the investing in things that can provide them with a better stature in society. We can now find free residential coaching institutes started with a special focus on providing guidance to tribal youth for different competitive and government job examinations. We also have names like Muhammad Yunus Khatana and Mr. Shaukat Naseem, who, with help of their talents and vision, have a successful career in the field of Indian
cinematography, and script writing for Bollywood, Tollywood, and other cinematic associations. There are numerous schemes launched by the government for the proposed upliftment of the Gujars and Bakrwals. Very famous among them was the introduction of mobile schools for the nomadic children, launched by the then Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi. The schemes are money, but the time is limited, so it would be very difficult for me to discuss all of them. I am picking up only the most effective ones for the discussion today. The first one is Swasthya Tribal Health and Nutrition Portal. Ministry of Tribal Affairs has identified 177 tribal districts as high priority districts for the said scheme. DBT, which we all know, DBT aims to bring transparency, eliminate misuse of funds, and enable enhanced monitoring of the schemes implemented by the Government of India. It is a program for an unprecedented expansion of direct benefits to the deprived and deserving. National Tribal Fellowship Portal. Honorable Prime Minister Narendra Modi rightly says, India will prosper when our tribal communities prosper. This is a central sector scheme of the Minister of Tribal Affairs, and every year 750 fresh ST students are given fellowship for pursuing MPhil and PhD courses. The applications are invited online on National Fellowship Portal. The detailed guidelines of the scheme, instruction manual, list of universities, and all information required for filling application is available on their website. The Forest Right Act, which is in process and it is very well known to all. FRA 2006 recognizes the rights of the forest dwelling tribal communities and other traditional forest dwellers to forest resources, on which these communities were dependent for a variety of needs, including livelihood, habitation, and other socio-cultural needs. National Tribal Research Portal. Tribal Research Institute TRI is the research body of the Ministry of Tribal Affairs at the state level. It is envisaged that TRIs should focus on their core responsibilities as a body of knowledge and research, more or less as a think tank for tribal development, preservation of tribal cultural heritage, providing inputs to states for evidence-based planning and appropriate legislation, capacity building of tribals and persons, institutions associated with tribal affairs, dissemination of information, and creation of awareness. There are 26 tribal research institutes supported by the Ministry of Tribal Affairs, Government of India. Hence, with the discussion, we can conclude that no creation of God is superior or inferior to the other. It is just a matter of opportunities and resources we grow up with. With combined efforts of the community, society, and government, it can now be said that Gojri is the third largest spoken language in Jammu and Kashmir. In addition to this, various universities are planning to start up money certificate diploma, PG, and UG programs in Gojri, similar to the available programs in different Indian languages. For example, Jammu University is doing the same. In the end, I would like to say that what is now proved was once only imagined. Thank you so very much for giving me an opportunity to speak on the occasion, and simultaneously, I am thankful to all the dignitaries who are present here. They are working for the improvisation of for the betterment of tribal community. This is actually a very adorable platform to church with the knowledge and other transformations in the community. Thank you all. Thank you so very much. शुक्रिया शबीर अहमद पासवाल साहब, अपने डिटेल से जो वीरेंद्र सर, मैंने वापस ज्वाइन कर लिया। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जो है अभी हम बात कर रहे थे शबीर अहमद पासवाल साहब का एड्रेस था अभी, जो मॉडर्नाइजेशन का जो इम्पैक्ट है जो कम्युनिटी पर है उसके बारे में उन्होंने बताया। देखिए मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ-साथ जो हम हमारी जो जड़ें हैं उनके साथ हम जुड़े रहें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम सब कॉपी करते हैं, वेस्टर्न आइडियाज़ को कॉपी करते हैं। हम अपने आइडियाज़ सामने लाएँ और अपने आइडियाज़ पर चलें हम, तो हमारा जो वसाइल तो है ही है, हमारा जो विज़डम है उसको सामने लाएँ। और आजकल के जो इस माहौल में हमें पढ़ना-लिखना भी बहुत ही अहम ज़रूरी है, उसके आगे जो है हम चल ही नहीं पा सकते। तो पढ़ने-लिखने के जो भी हमारे सामने जो हैं अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, हमें उसको अवेल करना चाहिए और सब में वो सलाहियत है हर किसी में, चाहे वो किसी भी खित्ते में हो, किसी भी कम्युनिटी से हो। तो जो भी हम वसाइल हैं, अवेलेबल हैं, उसका इस्तेमाल कर लें
और जो भी हम स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, वो भी हम उसको सर्कुलेट करें, हम उन तक पहुँचाएँ जिन तक वो चीज़ें बात नहीं आ रही है। और जो है उससे क्या होगा, उससे एक नई बेदारी सामने आएगी और साथ-साथ ही जो है वी शुड बी फील प्राउड अबाउट आवर हेरिटेज। वो बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। पढ़ना-लिखने का ये मतलब नहीं कि हम जो है अपने अपने जो है अपने जो कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपनी तहज़ीब-तमद्दुन को भूल जाएँ। पढ़ने-लिखने का ये है कि हम वो शऊर और पैदा करें और दुनिया को जो है दुनिया में हम अपना नाम रोशन करें, अपने कम्युनिटी का, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का। जैसे आप सब लोगों ने आज अपनी बात रखी, तो हमें बहुत ही निहायत ही मुझे खुशी हो रही है और मुझे लगता है बाकी सब लोगों को भी जो है जानने का मौका मिला है, जो जो इसका गौरवशाली अतीत है, इस कम्युनिटी का, इसका कंट्रीब्यूशन है हर किसी में, इकॉनमी में उसका कंट्रीब्यूशन है, कंज़र्वेशन में उसका कंट्रीब्यूशन है। तो मैं आपका तहे दिल से आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाजी खुर्शीद अहमद खताना साहब का, राना यूनुस अबरार का, दिशाद अहमद जी का, बिलाल ज़मज़म साहब का और डॉक्टर शबीर अहमद पासवाल जी का, कि आप आपने डिटेल में जो 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 गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है, इसके जो पहलू हैं, सोशो हिस्टोरिकल पहलू है, इसका जो है कम्युनिटी एंड जो है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का जो इसका एस्पेक्ट है, फिर जो रिसोर्स बिल्डिंग में आपका जो योगदान है और जो जो इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन है और दूसरा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स है, जो है आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको किस तरह से जो है उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आपने इस पर रोशनी डाली, आप सबका शुक्रिया। और मैं डॉक्टर निहारिका जी से मैं गुज़ारिश करता हूँ कि जो है हम आगे जो है जो अ, अगर पहले तो हम मुझे लगता है हमें एक सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर किसी के पास कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन है, वो आजकल हमारे जो जो एक्सपर्ट्स हैं उनके सामने वो रख सकते हैं और जानने के लिए गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के बारे में। तो प्लीज़ डॉक्टर निहारिका जी, प्लीज़ टेक द प्रोसीडिंग्स फर्दर। मेरा एक प्रश्न है मैम। मेरा एक प्रश्न है, वो है क्योंकि मैं दूसरे इदारे से हूँ, तो मैं यूनिवर्सिटी की मैं जानना चाहूँगा, क्या जैसे जैसे हमारा बहुत सारे सेंटर्स में ट्राइबल स्टडीज़ हैं और तो यहाँ पर क्या कोई ऐसा है, कोई डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर में किसी भी यूनिवर्सिटी में इस तरह का कोई स्टडी सेंटर है क्या? ये मैं जानना चाहूँगा। एक्चुअली मैं जैसे पहले ही बात कर रहा था, क्योंकि पहले तो ये जो सेंटर फॉर सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत एस्टेब्लिश हुआ था, जहाँ कि हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, उनके बारे में इश्यूज होते थे। लेकिन जब से हम लोगों ने लिया, तो हमने जब देखा तो सबसे पहला जो इश्यू हमारे सामने आया कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज में गुज्जर बकरवाल है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि इनके इश्यूज को डिस्कस करना जो था वो हमारे लिए बड़ा लाज़मी हो जाता था। तो उस पे समय से समय बात करते हुए हम सरकार से भी थोड़ा ताउन बनाए हुए थे। तो रिसेंटली जब हमारी बात हुई, खासकर जब ये डॉक्टर इकबाल चौधरी जी इसके इंचार्ज बने, तो उससे पहले भी जब हम बात कर रहे थे, तो जावेद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो हम कोशिश कर रहे थे कि जब हम रिसर्च स्टडीज करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा एक सेंटर परमानेंट मिले, जिसे हम डिपार्टमेंट के तौर पे एस्टेब्लिश करें और ख़ुसूसन वहाँ उनकी जो स्टडीज़ हैं इन ट्राइबल कम्युनिटीज़, पर्टिकुलरली गुज्जर और बकरवाल का काम हो। तो हमारी यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है, जैसे हमारा भद्रवाह में भी है, उधमपुर में भी है, रियासी में भी है, हमारे 7 कैंपसेस हैं, किश्तवाड़ में है, पुंछ में है। तो रिसेंटली हमें जब ऑफर आई कि हमारे पास ये डिपार्टमेंट ने कहा कि हम चाहते हैं कि इनके ऊपर रिसर्च भी हो, इस किस्म से रिसर्च हो, एग्जीबिशंस हो और लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट हो, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और जो रिसर्च है उसका आपस में एक मेल हो, ताकि इनके जो रियल इश्यूज हैं वो उभर के बाहर आए।
तो हमने उन्हें ऑफर करी थी कि हम आपको यूनिवर्सिटी के सारे रिसोर्सेज देने को तैयार हैं। तो रिसेंटली हमने अपनी यूनिवर्सिटी का पुंछ में जो है उन्होंने एमओयू साइन हुआ है, तो उसमें पुंछ कैंपस में एक सेंटर डेवलप किया है। तो उसपे जो है मेन तौर पे इनकी जितनी भी स्कीम्स हैं, एग्जीबिशंस हैं और वर्क है, वो थ्रस्ट एरिया को लेके उस पे वो काम करेंगे। और हम यूनिवर्सिटी में उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इश्यूज जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि हमारे पास अदर मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज का भी काम रहता है। तो खुसूसन जो पुंछ कैंपस में हमने जो सेंटर एस्टेब्लिश किया है डिपार्टमेंट ऑफ दिस ट्राइबल अफेयर्स के साथ, तो उनको हम सारी सहूलियत दे रहे हैं। उनसे सिर्फ हमारा इतना था कि वो कह रहे थे कि हम कुछ डेपुटेशंस पे आपके पास बदले भेज देंगे, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर सोर्सेज हैं वो हमारे पास नहीं है। तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और वो आगे आए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम उसे वहाँ एस्टेब्लिश करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी है वो हमारी तरफ से हो रहा है और रिसर्च जो है वो भी वहाँ हो रही है। तो इस प्रकार से हम खसूसन ट्राइबल कम्युनिटीज जिसपे गुज्जर और बकरवाल है, उनके लिए हमारा सेंटर वहाँ एस्टेब्लिश ऑलमोस्ट हो चुका है। शुक्रिया, शुक्रिया आपका बहुत-बहुत इसके लिए। मेरी तो यही एक सजेशन ये था कि जैसे हमारे जो इदारे ने एक नेशनल लेवल पर जो काम किया है, जो एक्सपीरियंसेस हमारे रहे हैं, सो वी विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर दोज़ एक्सपीरियंसेस वर्किंग विद डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड आल्सो देयर ऑफ कोर्स देयर शुड बी स्टडी ऑन द communities which are in UT and in this region, especially in the Himal region, but also there should be interaction with different, these ethnic groups, different tribal groups also, so as to develop more better understanding also, and one can learn from the experience of other tribal groups also in preserving their ethnicity and also their traditions also, and also their wisdom, which can be further taken to different regions in fact. उसी के बेस पे हमने ना जो प्रॉपरली पुंछ सेंटर में एस्टेब्लिश किया है, उसमें हम बहुत बड़ा एक म्यूजियम भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, सो दैट जितने भी इनके कल्चरल और एथनिक चीजें हैं जो इस समय लुप्त होती जा रही हैं, उनको हम वहाँ एस्टेब्लिश करें। तो बाकी रहा हमारा मेन कैंपस में ये सेंटर है, जैसे आप कह रहे हैं कि अदर मार्जिनल कम्युनिटीज के ऊपर भी जो हमारा काम है वो होता रहता है। तो वी वुड लाइक टू हैव कोलैबोरेशंस एंड कोऑपरेशंस विद यू पीपल जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो हम एक सेंटर प्लेस में बैठ के इस पे काम भी कर सकते हैं, गुफ्तगू भी कर सकते हैं, डिस्कशंस हो सकती हैं। अभी तो चलो हम वेबिनार के थ्रू लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ माहौल आसपास में अभी इतना खुला नहीं है। तो हमारा है कि जब हम खुल जाता है सारा आना जाना का, तो कोशिश करेंगे कि हम वर्कशॉप्स वगैरह भी जो है जम्मू यूनिवर्सिटी में इस सेंटर के थ्रू, सेंटर फॉर सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी में करें, ताकि नो डाउट की भेद तो ये रहता ही है कि हम जिस कम्युनिटी की बात करते हैं उसमें हमने तो पर्टिकुलरली एक थ्रस्ट हमने इसलिए बनाया था क्योंकि इस खित्ते में अगर देखें तो शेड्यूल कास्ट के साथ वेबिनार में अपना फोटो खींचना था, वो खींच लिया। जनसंख्या है, ट्राइब्स की है, और जिसमें पर्टिकुलरली गुजर्स एंड अभी आई थी तो आपको मैं बताऊं कि गुजर्स और बकरवाल की जब बात होती है और काफी हद तक हम गुजर्स के ऊपर ध्यान दे जाते हैं, तो वो बकरवाल्स का जो था वो सिस्टम थोड़ा सा पीछे रह जाता था। जैसे अभी खताना साहब ने भी बात की, एक दो स्पीकर्स और ने बात की कि जो ट्रांस ह्यूमंस हैं उनका तो चलना रहता ही है, लेकिन जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे आगे वो पर्टिकुलरली गुजर्स थे और धोदी गुजर्स वगैरह जो हमारे यहाँ खित्ते में है वो ज्यादा थे। तो उन्होंने अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था थोड़ा सा एस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन उसमें देखा कि जो हमारे बकरवाल्स थे ये अभी उस ट्रेडिशन में और ही बैठे हुए हैं, और इनके अपने सेट जो है एरियाज हैं और इनका रास्ता जो है, जो हम कहते हैं ट्रैक्स जो कहते हैं, वो इनके वेल एस्टेब्लिश ट्रैक्स हैं। और जैसे बीच में बात हुई एजुकेशन की बात हुई, लेकिन किसी ने हेल्थ का इशू नहीं उठाया।
क्योंकि देखिए जब सर्दी में नीचे और गर्मी में ऊपर जाने की बात है, तो हम जो है इनके साथ चलने वाले स्कूलों की बात करते हैं कि इनके साथ स्कूल जो है वो मूवमेंट पे रहते हैं, तो उनकी हालात क्या है, क्या वो प्रॉपरली चलता है, होता है? सेम इज विद द हेल्थ फैसिलिटी, क्योंकि हम भी सजेस्ट कर रहे थे कि जो इनका ट्रैक है चलने का, जो ये ऊपर से नीचे आते हैं पहाड़ों से और फिर दोबारा ऊपर जाते हैं, तो जब हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को भी या हेल्थ सेंटर्स को एस्टेब्लिश करते हैं, तो हमारी प्रायोरिटी आनी चाहिए कि हम इनके लिए उस ट्रैक को आइडेंटिफाई करके उस उन ट्रैक्स पे हेल्थ सेंटर्स को भी डेवलप करें, खसूसन इन्हीं के लिए। क्योंकि अगर हम हेल्थ का फैसिलिटीज इनके रास्ते में नहीं रखेंगे, क्योंकि इनका रास्ता वही है, ये उस रास्ते से हट के कम्युनिटीज में, जो रास्ते में कम्युनिटीज मिलती है उनके साथ इनका इंटरेक्शन नहीं होता। हाँ, बाज़ाफ्ता जब ये जा रहे होते हैं तो कुछ मिल्क प्रोडक्ट हो गए या कुछ इनके लाइफ स्टॉक के प्रोडक्ट हो गए, वो इनके अपने सर्वाइवल के लिए वो कहीं बेच देंगे, या इतना ही इंटरेक्शन होता है। या निकलते किसी मार्केट से निकले तो वहां इनका इंटरेक्ट होता है, जो ये बीच में अपना खाना वगैरह वो ले लेते हैं। लेकिन एज सच जैसे कि हम गुजर्स की बात करें तो उन्होंने जिस प्रकार से एस्टेब्लिश कर लिया है, जैसे अभी खताना साहब भी बात कर रहे थे, चौधरी साहब कह रहे थे कि हमने भी देखा है कि गुजर्स को अगर आप ऑक्यूपेशन से एक एथनिक ग्रुप को देखते हैं, तो वो तो एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है। वो तो आप राजस्थान, गुजरात से लेके अगर चलेंगे तो वो तो आर्यन टाइम से भी पीछे जाता है। लेकिन जब आप उसको रिलीजियस सेटअप में लाते हैं, तो वो पर्टिकुलरली एक बड़ा चंक जो है हमारे यहाँ ही इस खित्ते में है। तो इसलिए मेरे को हमेशा ये स्टडी करते हुए यही लगा कि जो बकरवाल्स हैं वो अपने आप को कहीं इस तरीके से एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। अगर वो नहीं कर पाए क्योंकि उनका एक कल्चरल और एथनिक सेटअप ही ऐसा है, क्योंकि वो चाहते भी नहीं है। कहीं हमने इंटरेक्ट करके भी देखा तो काफी सारी परसेंटेज वो इस तरीके से कहीं रुकना भी नहीं चाहती। वो यही फील करते हैं कि यही हमारा पीछे से चलता आ रहा है, यही हमारा ट्रैक है, यही हमारा लाइफ स्टॉक है और हमने इसी तरीके से चलना है। बट हमारी सरकार से यही रहता है कि आप जब ये कर रहे हैं तो एजुकेशनल एज वेल एज जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो इनके ट्रैक आइडेंटिफाई करिए, हम आपको आइडेंटिफाई करके देते हैं। आप जो प्रायोरिटी पे इनके ट्रैक्स पे जो है हेल्थ फैसिलिटी को लाइए। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, अब जैसे हमने काम किया, हमने तो इवन मार्जिनल से मार्जिनल कम्युनिटी पे हम तो हिजड़ों के ऊपर भी काम करने के लिए चले गए और शेड्यूल कास्ट महाशा कम्युनिटी जो है उन पे भी हम करें। हम तो कोशिश करते हैं कि जितने भी वो कम्युनिटीज हैं जहां मेन स्ट्रीम में वो कहीं बात नहीं होती, कहीं लाई नहीं जाती है, तो ऐसे डॉक्यूमेंटेशन होके हमारे पास होनी चाहिए, ताकि जैसे मैंने पहले कहा कि जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, प्लानिंग में हैं और साथ के साथ इवन जो आने वाली हमारी जनरेशन्स है, जो वो रिसर्च के लिए अगर आगे आएंगी तो उनको भी पता होना चाहिए। अब देखिए हमने रिसेंटली देखा, जब अब मैं अभी बात कर रहा था तो हमारे डॉक्टर अपने ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं अपने चौधरी साहब, जरा डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी। तो रिसेंटली उन्होंने अब एक प्रोविजन बनाया, मैं देख रहा था न्यूज़पेपर में भी खुश हुआ कि एटलीस्ट जो ये कम्युनिटी हैं जब ये मूव करती हैं तो इनके लिए अब वो ट्रक्स की प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। उन्होंने लगभग 100 ट्रक्स की प्रोक्योरमेंट हो रही है कि जब वो इस ट्रैक पे जाते हैं तो उनको लाने ले जाने के लिए उन्होंने बात करी आरटीओ से भी, तो गवर्नमेंट इसके लिए वो प्रोक्योरमेंट कर रही है। सो ऐसे एफर्ट्स होने चाहिए कि डिफरेंट एजेंसीज जो बीच में हैं, जैसे ट्रक्स की है तो कुछ एमओयू साइन हो रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ, उसी तरीके से मैं कहता हूँ कि इनको हेल्थ के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ भी एक स्पेशल एमओयू साइन होना चाहिए कि ये हमारा टाइम है, ये हमारे डेज हैं, ये हमारा ट्रैक है और यहाँ आपकी जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल रहनी चाहिए इंसानों के लिए भी और मवेशियों के लिए भी। कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा है कि सरकार ने मवेशियों के लिए फैसिलिटी कर दी, तो हम जाके देखते हैं वो बोर्ड ही होता है और कमरा जो है वो बंद पड़ा होता है, वहां कोई होता नहीं।
तो ये इसके लिए जरूरी है कि इनके डेज जो है वो जो है पूरा टाइम पीरियड एक ट्रैक का एस्टेब्लिश हम कर लें और उसमें हम जो फैसिलिटीज हैं जानवरों की और इंसानों की जो है वो वहाँ हो। सो आई थिंक आपका बहुत अच्छा सुझाव है, हम वेलकम करते हैं। और जब कभी भी आपका ऐसा प्रोग्राम बनता है, थोड़ा सा ये खुल जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको पुंछ कैंपस में भी एज वेल एज जम्मू यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में भी हम ऐसे सेमिनार्स करें, वर्कशॉप्स करें, जहां हम आपस में मिलके डिस्कशंस करें और जितना हम विचारों का और यथार्थ जो स्थिति है उनका अगर आदान प्रदान कर सकते हैं तो डेफिनेटली मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, हम इस कम्युनिटी की ही तरक्की के लिए काम नहीं करेंगे, हम पूरे समाज के काम को के उत्थान के लिए या बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं। थैंक यू। सर मुझे रिक्वेस्ट है, जैसे प्रोफेसर जसवीर सिंह साहब ने अभी बताया कि गवर्नमेंट इस पे क्या कर रही है, तो उसमें मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पिछले साल एक सर्वे कराया पूरे नोमैडिक पॉपुलेशन का जी, जो माइग्रेट करते हैं, तो उसमें लगभग 80 से 90,000 फैमिलीज माइग्रेट कर रही हैं और उनका टोटल पॉपुलेशन लगभग 7-8 लाख पॉपुलेशन बन रही है। और उसपे हमारी मेरी डिस्ट्रिक्ट में भी 4100 फैमिलीज ऐसी हैं जो माइग्रेशन कर रही हैं। तो उसके लिए हमने एक तो हेल्थ के लिए भी डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब ने इस बार एक प्लान बन गया है NHM के साथ उन्होंने मिलके, वो मोबाइल ये सब सेंटर्स, हेल्थ सब सेंटर्स रहेंगे और इसी तरह वो ट्रांजिट अकोमोडेशन बना रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ शोपियान में एक बन रहा है, पुलवामा में एक बन रहा है, राजौरी पुंछ से बन रहे हैं, तो ट्रांजिट अकोमोडेशन भी बन रहे हैं। और जो स्कूल्स है, जैसे मोबाइल स्कूल थे, इस साल तो मेरी डिस्ट्रिक्ट में 85 सीजनल स्कूल थे, तो उनको मैंने खुद भी विजिट किया। मैं खुद हर एक स्कूल में गया CO साहब को साथ लेके, तो वहाँ 1-2 स्कूल का विजिट तो हमारे सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स ने भी किया, तो उस पर काम हो रहा है। और इसी तरह जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंडर जम्मू में फंक्शनल हो गया है। तो अगर फर्दर उसमें कोई आप यूनिवर्सिटी के थ्रू भी जुड़ेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। जनाब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हम ऑलरेडी उनसे जुड़े हुए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से। उनके कुछ था एक रिक्वेस्ट की आप प्रोजेक्ट्स और स्टडीज करके दीजिए, और पिछले साल ही हमने जब अकबाल साहब आए हैं तो उसी समय ही हमने एक बड़ा अच्छा इनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किया है। तो मेरा ख्याल जम्मू यूनिवर्सिटी से ही हम सबसे पहले थे जो फंड्स का पीछे से इंतजार किए बिना हमने पहले ही रिपोर्ट अपनी बना के सबमिट करी। तो हमें ये भी खुशी होती है कि कुछ उसमें जो हमारी सजेशन थी वो डॉक्टर साहब ने काफी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट भी करी। तो वो जो सर्वे वगैरह की बात है वो है, तो हम तो हैं, हमें जो मौका मिलेगा, जो क्योंकि हमसे इससे कहा पहले सर ये कह रहे थे कि ये माइग्रेट होते ही नहीं, कौन होते। तो जब इस बार 80 से 90,000 फैमिली माइग्रेट सर्वे हुआ, तो उसके बाद फिर 7-8 लाख पॉपुलेशन बन रही है जो माइग्रेशन करती है, तो उन पे काम हो रहा है अब तक। हाँ हाँ, नहीं वही उसमें ही जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि हमारे इसी सर्वे में हमने पाया था कि जो हमारी यहाँ से पॉपुलेशन जाती है ये लगभग गुरदासपुर तक क्रॉस कर जाती है। बेशक सर, इस साल में खुद जो यहाँ से मैंने अपने लोगों को देखा, जा मैं गया था पिछले बार वहाँ वो क्रॉस कर जाती है। तो इसके लिए हमारे लिए बहुत जरूरी लोगों को देखा। हाँ, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी इस पॉपुलेशन का पूरा एक ट्रैक आइडेंटिफाई करके उसको हम फॉलो भी करते रहे, ताकि उसमें क्या होगा कि इनकी एजुकेशन, हेल्थ और सिक्योरिटी का भी प्रोविजन जो है वो काफी हद तक हो जाएगा। तो जैसे अभी मैंने शेयर किया, ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ MOU करके कि मतलब कि ये लोग अगर जिस जगह से आगे जाते हैं तो अगर ट्रक्स पे इनके मवेशी जो हैं वो चले जाते हैं, इनका समय भी बचेगा और जो बीच में कैजुअलिटीज होती हैं लाइफ स्टॉक की वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि इनकी जो लाइफ स्टॉक का जब कैजुअलिटी होती है तो एक लेवल पे चलती, क्योंकि लो लेवल इनकम ग्रुप है ये, तो एकदम इनकी इनकम नीचे गिर जाती है। बेशक सर, तो वो इनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ये काफी अच्छा ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी साहब को बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। तो उम्मीद करते हैं माशाल्लाह आने वाले समय में दे रहे हैं
आने वाले समय में और ऐसे इनिशिएटिव होंगे तो हम सारे और मिलजुल के इम्प्रूवमेंट होगा सर इसमें आने वाले समय में और मगर मेरी दूसरी वीरेंद्र बंगलू साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इसमें आप ये एक तो डिवीजन लेवल पे कुछ ऐसे फेस्टिवल और सेमिनार कराइए जो जिनमें हमें बाकी लोगों को भी मौका मिले ताकि वो भी पार्टिसिपेट इसमें करें। जरूर जरूर हम एक्टिव रहे हैं, जैसे कश्मीर में पहले भी हम एक्टिव रहे हैं। मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि जैसे हालात इस तरह से रहे थे, हम ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाए, लेकिन हम एक्टिव रहे हैं हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख में। और हमने वहाँ कम्युनिटीज के साथ मिलकर के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स किए जिसमें वहीं के लोग शामिल थे। मतलब हमारा तो खाली जो था कि एक मैनेजमेंट ही कर रहे थे, बाकी सब उस मैनेजमेंट में भी उनकी दखल थी। तो और अच्छे उसके नतीजे निकले और हमने जो है फेस्टिवल्स कराए, जैसे यहाँ पर एक कम्युनिटी है, गुरुपाज हैं, जो दरदारियंस हैं, उनका एक बहुत बड़ा जो है हमने एक फेस्टिवल किया दिल्ली में, और उसमें जो है वहीं के बच्चे थे। जो सेमिनार हुआ तो सेमिनार में वहीं के बच्चे थे, तो ये नहीं कि कोई और बोल रहा है, मतलब वहीं की शमूलियत थी और एग्जीबिशंस हुए, उसमें प्रोग्राम्स हुए, परफॉर्मिंग आर्ट्स थे, क्राफ्ट्स थे। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि जैसे हमारे जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है और भी जो कम्युनिटीज है, मार्जिनल कम्युनिटीज हैं, उनको हम प्रोजेक्ट करें, यहाँ पर स्टेट लेवल पर भी करें, यूटी लेवल पर करें और नेशनल लेवल पर करें, और जिससे जिससे उनको भी एक फीलिंग को प्राइड हो कि हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अदरवाइज उनको लगता है कि हम तो अलग ही हैं, तो पिछड़े हुए हैं। लेकिन जब वो शमूलियत करेंगे हर किसी प्रोग्राम में, तो उनको भी एक फीलिंग आएगी ऐसे कि वो देश के साथ जुड़े हुए हैं, और हर किसी का रोल तो है ही है, हर किसी कम्युनिटी का इस देश को बनाने में, और हर किसी का फर्ज बनता है कि हम दूसरे को ताउन इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि एक प्लेटफ़ॉर्म एक और मिल जाता है और लोग जुड़ जाएँगे। इसमें एकेडमिक एक जो है सपोर्ट भी इसमें आ जाएगा इसमें, और आप सब जो हैं इसके साथ जुड़ जाएँगे तो एक हम और फर्दर एक प्रोग्राम्स कर सकते हैं, डिफरेंट लेवल्स के, डिफरेंट लेवल के। और उसमें जो है बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो और भी फ़ील्ड्स में जा सकते हैं। ये नहीं कि खाली जो महदूद हमारे यहाँ फ़ील्ड्स हैं, नेशनल लेवल पर और भी जो फ़ील्ड्स हैं, जो जिसको जितनी सलाहियत हो उसमें आ जाएँगे, वो कंट्रीब्यूट करेंगे। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत, यूनिवर्सिटी का भी आप सबका धन्यवाद। बांगडू सर, मेरा एक सवाल होगा प्रोफेसर जसबीर सिंह सर से। जी। प्रोफेसर साहब, काफी अर्सा पहले जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक बात कही थी कि पीजी कोर्सेज जो हैं उनको वहां पे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा जम्मू यूनिवर्सिटी में गोजरी जबान में। तो सर इस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुई, तो इसके हवाले से प्लीज सर बता दीजिए। उसपे हमने क्या किया था कि क्योंकि अभी कोई डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश नहीं हुआ था पहले, क्योंकि जो हमारा डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश इन्होंने करना चाहा था वो हमें काउंसिल ने पुंछ कैंपस में दिया था। दैट्स वाई अभी हमने इसको एमओयू करके म्यूजियम वगैरह का वहाँ किया है। और जो गोजरी जुबान की बात है, वो हमने 2 पेपर जो थे, हमारे यहाँ ओपन कोर्स होता है, तो उसमें हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो जो बच्चों ने वो जो 2 पेपर पढ़ने होते हैं, तो उसमें वो अभी उस तरीके से पढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि धीरे-धीरे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी जुबान को या किसी कोर्स को आपने शुरू करना है, तो उसको धीरे-धीरे ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा पुंछ कैंपस में अलॉटमेंट हुई है, तो ये वहाँ से शुरू हो जाएगा। तो देखिए, शायद अदरवाइज़ हमने 2 पेपर तो इंट्रोड्यूस कर दिए हैं हर बच्चे के लिए जो भी पढ़ना चाहता है अपने ओपन कोर्स में। वो चाहे किसी भी स्ट्रीम का हो, चाहे साइंसेज़ का हो, आर्ट्स का हो, सोशल साइंसेज़ का हो, तो उसके लिए ये प्रावधान है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बेशक।
ओके जी, अलविदा। इस उम्मीद के साथ कि फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। अच्छा